So winter is almost upon us. Yes, CAT 2022 is just round the corner. Keeping this in mind, we know each and every one of you is really excited, but is also looking for the last final push and the fillip that is going to add those extra 5, 10, 15 percentile to your final CAT score. Well, because of this, BYJU'S exam prep brings to you the last lap to CAT 2022, starting on the 17th of October, all the way till the 20th of November. Yes, 4.5 intensive, in fact almost 5 intensive weeks of preparation. What more, the focus is predominantly going to be CAT, which means, as we know, time, speed, distance and time and work in totality have almost equal weightage or sometimes even more weightage than geometry. So can we go ahead and leave geometry and just focus on these two? Can we go ahead and leave entire theta para jumbles and still score a 99.99 percentile in verbal? Yes, we can. This and much more in terms of preparation, in terms of intensive questions that we're going to look at and the smartest way of going ahead and solving that. So catch us on the BYJU'S exam prep app, and in case you missed that, on YouTube. But go ahead, download the BYJU'S exam prep app and also get a 99 percentiles kit which is going to help you ace CAT 2022. See you soon. Very good morning everyone and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and this is our weekly editorial Aeon analysis. I hope you can clearly hear and see me. I'm so sorry that I couldn't be available for these classes for the last 2 weeks because I was occupied with something, but then now that's over. We are back with our weekly editorial analysis where I bring one article usually for you from Aeon or any other source that I think is important for your preparation because CAT is just around the corner. So we have yet another article for you. So good to see you guys back. Hi, good morning Karthik, Disha and everyone who's watching me live. So good to see you back. Now let's have a look at what exactly are we going to be doing today. I'll tell you what is the purpose of these classes because I've resumed the classes after a 2-week-long break. So let's have a look at what are we going to be doing. So the agenda of the session is that I usually bring 1 or 2 articles depending upon the length of it. Today's article is from the Aeon. And usually Aeon articles are so long that I try to remove some paragraphs from it. I try to make it concise. Still, with one Aeon article, we are usually not able to do the second article. So I've brought, instead of 2, I've brought 1 article for you that we're going to be doing today. The source is from the Aeon. अब उसको पढ़ेंगे कैसे? क्या पर्पस होगा उस एओन आर्टिकल का ये समझो. सो जो एओन आर्टिकल मैं आपको लेके आऊंगी उसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी एनहांस करोगे. देयर आर मेनी न्यू वर्ड्स दैट यू सी इन टुडेस आर्टिकल. द टॉपिक दैट आई बी ब्रिंगिंग विल बी समथिंग जो कि कैट या और एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं. वैसे टॉपिक्स जिन पे पैसेजेस आते हैं एग्जामिनेशन में. तो आपकी कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज करना. यस दिशा, गुड टू सी यू टू माय चाइल्ड. तो आपकी कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज करना उस पैसेज के साथ, उस टॉपिक के साथ, ये एजेंडा है. समरी निकालना सीखेंगे बिकॉज आपको पता है समरी क्वेश्चंस क्या है और बाकी एग्जामिनेशन में दूसरे फॉर्मेट में जिस्ट ऑफ द आर्टिकल, मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल, एटीट्यूड ऑफ द ऑथर उस फॉर्म में बहुत बार आता है. तो समरी, मेन आइडिया, मेन थीम निकालना सीखेंगे. कैसे निकालते हैं? वन मोर पॉइंट, अगर समरी क्वेश्चन नहीं भी आता है, मेन आइडिया क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपको मेन आइडिया पता होना चाहिए. अगर आप टाइम इन्वेस्ट, माइंड माई वर्ड्स, आई विल रिपीट दिस, अगर आप एक पैसेज पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसका मेन आइडिया पता होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन एलिमिनेशन में मेन आइडिया आपको हेल्प करेगा, लाइक इन्फरेंशियल क्वेश्चंस व्हिच आर एम्पल इन ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो मेन आइडिया कैसे ढूंढते हैं, कैसे जल्दी पढ़ के मेन आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं, ये निकालेंगे आज के आर्टिकल में. और ऑफ कोर्स इन्फरेंसेस निकालने की कोशिश करेंगे, टोन ऑफ द ऑथर भी निकालने की कोशिश करेंगे इस पैसेज में आज. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पेज. पढ़ो पेज को. एओन से आर्टिकल है, पढ़ के सेंड मी योर डन एंड देन आफ्टर यू सेंड मी योर डन आपको मुझे बताना है व्हिच लाइन इज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट हियर. आपको आर्ग्यूमेंट वाली लाइन पिन पॉइंट करके मुझे बतानी है. जल्दी से पेज पढ़ो एंड सेंड मी योर डन. हाय अमृत. अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने फाइनली जो एक्सक्लूसिव बैच है उसमें जगह बना ली है? जो हाईएस्ट परसेंटाइल होल्डर्स हैं आप में से कितने लोगों ने उस
प्रीमियम बैच में जगह बना ली है. Savitri ma'am was telling me I have a few kids coming to this class who have a place in that batch. Thank you, Amrit. Thank you. इस पेज में 2 लाइन्स हैं जो आपको ध्यान देना जरूरी है. Not 1 but 2 lines. Who can point out both the lines to me? जो आर्ग्यूमेंट्स है ऑथर का. कौन वो दोनों लाइंस पॉइंट आउट करके बताएगा मुझे? दो लाइंस इस पेज में इंपॉर्टेंट है. ये समझिए मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने को क्यों सिखाती हूँ. जब आप आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते हैं आपके 99% क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट से स्टेम आउट होते हैं अनलेस एंड अनटिल वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस आप खुद आंसर कर सकते हैं. आई एम श्योर उसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है. दे रिटन. सेम वर्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल. यस दिशा. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है? जो ऑथर एक क्लेम की तरह प्रेजेंट कर रहा है. मैं आपको पॉइंट आउट करके बताती हूँ. देखो एक लाइन की कैसे हमारे लिए ये काफी ये ऑड है कि इंग्लिश सेम वर्ड यूज करता है यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए. दैट मेक्स इंग्लिश ऑड. तो ये ऑथर का क्लेम है कि इंग्लिश ऑड है. और क्यों ऑड है? क्योंकि वो एक ही वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज करता है. हम हिंदी में तो नहीं करते. हम तो हिंदी में आप भी यूज करते हैं. राइट तो हम उसमें इंस्टेड ऑफ 2 वर्ड्स हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं. उसके लिए एक ही वर्ड यू आ जाता है इंग्लिश में. ऑफ कोर्स इंग्लिश ऑड है यहाँ. एंड देन दिस अनदर इंपॉर्टेंट लाइन एंड ओके भरत गुड ट्राई. Yes, Amrit, it's the distinctions of politeness. That's the important line. देखिए ये लाइन ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है. As often as not, languages do even more than just distinguish the singular and plural. देखो लैंग्वेज में जब हम तू और आप यूज करते हैं तो ये एक डिस्टिंक्शन तो हो जाती है सिंगुलर प्लूरल की डिस्टिंक्शन जो हम यू की तरह यूज करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जो ये डिफरेंशिएशन इन वर्ड है इट ऑल्सो मार्क्स अ डिस्टिंक्शन ऑफ पोलाइटनेस एज वेल. कैन आई से यूजिंग यू is same for being rude or being polite? It is. It is same for being singular and plural as well, which is not the case with other languages like Spanish or Hindi or French. That's not the case with us. So, these are the 2 lines जो author ने अपने personal opinion से आपको बोली है. और आर्ग्यूमेंट कौन सी लाइन्स होती हैं? आर्ग्यूमेंट वही लाइन्स होती है. यस दिशा. आर्ग्यूमेंट्स वही लाइन होती है जो ऑथर के पर्सनल क्लेम्स होते हैं. उन क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए ऑथर बहुत सारी चीजें लिखेगा. जो चीजें ऑथर लिखता है वो प्रेमिस है, वो हमारे मतलब का नहीं है. हमको फोकस करना है ऑथर के आर्ग्यूमेंट पे. तो ये 2 ऑथर के आर्ग्यूमेंट थे. पहला सिंगुलर प्लूरल के लिए भी सेम किया और पोलाइटनेस भी सेम हो गई यहां. ठीक है तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं क्या पैसेज सिर्फ यू की ही बात कर रहा है या और लैंग्वेज में इट ड्वेल्स डीपर इनटू इट. लेट्स गो टू पेज नंबर 2. आई होप पेज नंबर 1 सबका क्लियर है कि कैसे लैंग्वेज में स्पेसिफिकली इंग्लिश में एक ऑडिटी है. ऑडिटी ये है कि हम एक ही वर्ड यूज करते हैं पोलाइट नॉन पोलाइट के लिए भी और सिंगुलर प्लूरल के लिए भी. पेज नंबर 2. Here you go. Read this and send me it and identify the arguments, everyone.
Ma'am, my English is weak for interview. What to do? Raj and everyone else who thinks आपका इंग्लिश वीक है इंटरव्यू के लिए, एक तो जैसे ही कैट और बाकी एग्जामिनेशंस हो जाते हैं बाय दिसंबर मिड, विल हैव सेशंस ऑन इंटरव्यूज. बट एक सजेशन देती हूँ, इंग्लिश वीक है, आपको क्या लगता है? वाज आई बॉर्न इन अ हाउस होल्ड जहां इंग्लिश हमेशा बोली जाती है? माई डैड loves Hindi and he utterly criticizes me for being an English teacher. This passage gives us one of the reasons कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, इट्स एन ऑड लैंग्वेज. माय डैड इज अ प्रमोटर ऑफ हिंदी, उनकी हिंदी एक्सट्रीमली गुड है, बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है, हम आपको उन सेशंस में आई विल बी टीचिंग यू वेज हाउ टू टैकल. क्योंकि अगर आपके माइंड में, आपके थॉट्स में क्लैरिटी है ना, तो आपकी लैंग्वेज कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं होगी इंटरव्यूज क्लियर करने में. ये बात याद रखना राज. ओके, सो इफ योर thoughts are clear, if your mindset is clear, if you can express your opinions in a mixed language as well, your language will never be a barrier in your selection. You have to remember this. Okay, back to, and then of course we'll have sessions, so make sure you attend the sessions. चलो जल्दी से ये पेज पढ़ लो अब. ओके, अब ये जो मैंने फर्स्ट वर्ड हाईलाइट किया, यू होल, इज इट अ क्रिटिसिज्म टू द यूजेज ऑफ यू और ए न्यूट्रल स्टैंस और एन अप्रिसिएशन? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑथर का while he uses the word you whole, uses the phrase you whole? Because English has been a foundation language to many languages. Example इस first paragraph में दिया हुआ है. You would understand the author's stance here. और ऑथर का स्टैंड समझना आपके लिए एक्चुअली बहुत जरूरी होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. तो ऑथर कैसे देख रहा है वर्ड यू को आफ्टर ही यूजेस द वर्ड यू होल? इट इज दिशा, इट्स क्रिटिसिज्म नॉट न्यूट्रल. उसने बोला है यू एक ऐसा वर्ड है जिसने एक होल क्रिएट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में. वहां एक वैक्यूम था कि वो सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए. इट्स एन अब्सर्डिटी, इट्स एन ऑडिटी. तो जैसे ही लैंग्वेजेस यू से जैसे ही लैंग्वेजेस इंग्लिश से स्टेम आउट हुई, लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस में इस ऑडिटी को फिक्स कर दिया. इस तरीके से फिक्स करने की कोशिश करी कि उन्होंने यू सिंगुलर प्लूरल तो बना ही दिया, प्लूरल में भी यू फॉर 2 पीपल के लिए अलग वर्ड बना दिया, यू फॉर 3 पीपल के लिए यू टू पहला यू थ्री पहला अलग वर्ड्स बना दिए. दैट मीन्स यू का यूजेज लोगों को बॉदर कर रहा था. यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूजेज लोगों को बॉदर कर रहा था. ऑथर ने बोला ये एक होल था, ये एक गैप था, इस गैप को फिल करना जरूरी था. तो जैसे ही लैंग्वेज स्टेम आउट हुई इंग्लिश से, लोगों ने इस गैप को मेंड किया, उसको फिल किया, उसके लिए नए वर्ड्स बनाए, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए. प्लूरल में भी मल्टीपल वर्ड्स बना दिए. वो इतना बॉदर थे यू के सेम यूजेज के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में. Looks like the entire passage is going to talk about you only, showcasing the oddity in English language. ठीक है. Now this a very important word pigeon. ये मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है. Pigeon is usually used with English language, एक simplified English language. For example, देखो जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपको क्लासेस लेती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ कुछ, I'll be using English, but I'll not be using a lot of difficult words because I want you to understand the passage before anything else. I might not be focusing a lot on grammatical rules because I want you to understand the language. So when Englishmen, they ventured into unknown lands and they wanted to communicate with the locals, they used pidgin English. That is simplified grammar, simplified vocabulary to be used in English so that locals could understand that, so that locals could grasp it.
That is pidgin. Pidgin is a simplified form of language. Okay, so pidgin English was used, and automatically, since a simplified form of English was used, people started picking up English, but they had to mend the whole. So they started using words like you two pehla, you three pehla. Double के लिए, triple के लिए भी अलग अलग you के words बन गए, like you two fella and you three fellas. Okay, so ऐसे words बन गए. Next paragraph is merely a continuation of the premise. ये पूरा आप स्किम कर सकते हो, यहां कोई भी लाइन ऑथर का आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, आई होप दिशा यू अंडरस्टैंड ये क्यों न्यूट्रल नहीं है, ये क्यों एक क्रिटिसिज्म है. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं ऑथर और क्या क्लेम्स लेके आता है. पेज नंबर 3 एवरीवन, रीड दिस एंड सेंड मी अ डन. Yes, Bharat, exactly. Pidgin English, very good usage of that. And Bharat, I'm very proud of you for using the word Nigerian and not using any offensive term for them. I'm very proud of you. हम ऐसे ही एक सोसाइटी बनाते हैं जो बहुत इंक्लूसिव होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. Let me move my torso a little. I think it's hiding the. Hi Satyam, read the page, my child. देखो मैंने कुछ लाइंस हाईलाइट करी हैं, ध्यान दो मैंने क्यों हाईलाइट करी है. I want you guys to understand why have I picked up some lines, because I want you to focus on them and I want you to understand which line should you focus on while you're reading a passage. चलो अब एक एक करके लाइंस को एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो एक एड का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, पहला क्वेश्चन, why is the example of the ad given? कौन आंसर करेगा? Why is the example of the ad given here? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर अगर ये पैसेज आएगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. आई एम टॉकिंग एज अ क्वेश्चन मेकर. क्यों दिया ये एग्जाम्पल? सोचो सोचो. एड का एग्जाम्पल, एक एड हुआ, क्यों दिया एग्जाम्पल? मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होगा आंसर. सोच के बताओ. नोबडी, ये तो इजी है. क्यों दिया है एड का एग्जाम्पल ऑथर ने? प्रेमिस है, किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होगा. किस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है ऐसे सोचो. कोई भी चीज पैसेज में लिखी हुई है वो किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में लिखी हुई होगी. किस क्लेम के सपोर्ट में लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल?
I'll answer this. ये इसलिए लिखा हुआ है, हाँ, of course Bharat, yes. To answer the fact why this language was used, the language was used क्योंकि वहां singular और plural you different है. Exactly क्यों used है, author को भी नहीं पता, लेकिन author ने एक claim दिया है यहाँ. ये जो mystery थी कि ये language used थी इस ad को बनाने में, वो शायद एक urgency को denote करती है. Urgency of fixing a problem with English. What was the problem that we've been discussing all this while? You being same for singular and plural. और इस प्रॉब्लम को फिक्स करना था शायद एड मेकर को, तो उसको लगा यू अगर मैं यूज करूंगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स, तो शायद वो अर्जेंसी की डूड इसको फिक्स करो, ये अनकॉल्ड फॉर है, ये अनजस्टिफाइड है कि आप यूज सेम यूज करो सिंगुलर प्लूरल के लिए, शायद वो अर्जेंसी उसके एड मेकर के मन में थी. बिकॉज ऑफ दैट the ad maker has used this language instead of using English. So this example has been used to denote the urgency people have in their minds to fix the oddity in English language, where you is used same as singular and plural. Exactly, Disha. To explain the urgency of people for using distinguished meanings for the word you. Absolutely correct. Okay. And then the author dwells into the past. I'm sure you've read of thou and thee, and you know singular and plural के लिए हमारे पास थे दो different words in English जिसको हमने खत्म किया, and now we are using only two words, only one word, and that's you instead of two words thou and thee. तो मेरे पास singular के लिए plural के लिए words थे, yet we removed these words and we started using you. What happened with English? If I highlight this question, what comes to your mind? My next question is, what do you know about the tone of the author if you see such questions coming up again and again? What can you think about the tone of the author when you see such questions coming up? ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएंगे पैसेज में. The moment you see such questions coming up, it should give you a hint. Very likely the next paragraph is going to answer this question. Very likely that's going to happen. But what do you know about the tone now? Analytical? Can it be discursive? It could be. Abhi analytical, dekho. No, Karthik, instead of, because see, criticism is only finding faults, but the author is putting up questions as well. Okay, Karthik, let me make it clear to you. So, for example, if there's a child who doesn't study, okay, I'll keep constantly saying, you don't study, you are unable to do anything, you will not achieve anything in life, you're just lazy. All these are criticisms. But then if I go and ask, my child, why don't you study? What is that's bothering you? What is that stopping you? Am I only criticizing? No, I'm not. When I'm putting up questions again and again, I'm also focusing on analyzing the issue. Probably a discursive tone that discusses various aspects of an issue, like the issue put up here. It could also be, thoughtfulness about what's happening and contemplating your own thoughts. So the tone could also be contemplative here. Do you agree, Karthik? So these are the hints questions give you. Till this time, before the question was put up, the tone, of course, was criticizing. But then after the question started coming up, it could actually be analytical or discursive or contemplating anything. Okay, now let's go to the next page. Of course, the next page is going to answer what happened with English. Why did we discard thou and thee and we moved on to using only one word you? Why did that happen? I'm sure it's a very interesting answer for you. Read the next page and you would actually be surprised कि क्यों हमने thou और thee को give up करके सिर्फ एक word you use करना start किया. It's a very funny explanation. पढ़ो next page and send me a done.
Now you see, such a funny explanation of why we gave up on the usage of thee. We started using only thou, and then obviously that became you. It's a funny explanation. The explanation is, जब हम तू in English, in Hindi use करते हैं, it's a very impolite, not a very respectful way. And for showcasing respect, plurals were used. जैसे example है the queen's response, we are not amused. She would say this for her own self to show the distinction between her holiness, her highness, and people who belong to the lower level than she did. तो क्योंकि उनको respect दिखाना था language में, they started using the word thee instead, thou instead of thee. Thou क्योंकि वो plural को denote करता है और क्योंकि वो बहुत respect को denote करता है. So can I say respect was one of the reasons why plurality and singularity of you became one? Yes, respect was one of the reasons. This whole paragraph about the queen says that. To show more respect, हमने plural use करना start कर दिया, and thus thou came into existence. Thee was completely ostracized. The second paragraph here in this page is merely a part of the premise, explains this paragraph furthermore. So if you've understood this paragraph, you can absolutely skim through this paragraph. Nothing very important coming up here. Examples to showcase how thou came into existence and removal of thee happened. आगे चलते हैं next page में, ठीक है? अच्छा, okay, जल्दी से next page चलते हैं, फिर एक बात करूंगी आप लोगों से. Stick with me till the end of the class. I have to talk to you about a couple of things, ठीक है? Next page. हाँ, एग्जैक्टली चिराग, बिल्कुल. मतलब आई एम राजस्थानी, राजस्थान में तो ऐसा बहुत होता है. ऑल दो किंगली लैंग्वेजेस. अब देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पेज में मेंशन हैं, ठीक है? आई पॉइंट आउट दीज. सो पहला पॉइंटर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑथर ने ये ड्रंकन अंकल, क्रिसमस पे ड्रंकन अंकल का एग्जाम्पल दिया है. हम उसको दिवाली से लिंक कर देते, ठीक है? हमारे यहाँ दिवाली पार्टीज होती हैं, ताश पार्टीज होती हैं. देन देयर इज दिस ड्रंकन अंकल हु लूजेस एवरीथिंग इन द ताश पार्टीज. हम उनको डिस्कस करते हैं क्या बैठ के? नहीं, हम याद करते हैं, वी लाफ इट ऑफ और हम उनको डिसमिस कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अंकल ड्रंक ही रहते हैं ऑल द टाइम. दिवाली पार्टीज में ही इज ड्रंक, ठीक है? हम उनको डिसमिस कर देते हैं. उसी तरीके से ये जो ऑडिटी है ना हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश में, यू का सिंगुलर प्लूरल, वी नो इट्स देयर, वी लाफ ओवर इट, फिर हम उसको डिसमिस कर देते हैं. उसको डिसमिस करने का रीजन क्या पता है? उसको डिसमिस करने का रीजन है दैट आप वर्बल लैंग्वेज में चेंजेस ला सकते हो, बट बिकॉज इट्स कैजुअल, बट द मोमेंट यू से you want to bring a change in writing, the moment you put it in writing, it denotes permanence, and that is loathed, that is hated. Nobody accepts permanence, permanent change in language. When you try to change a language, you are met with opposition. So we know there's this oddity in language. We just think about it and we laugh it off. We don't try to put it, we try to fix it in our verbal language, but we can't fix it
in writing, because the moment we put it in writing, it denotes permanence, it denotes disruption of the language. And I'm sure nobody, none of us would want to dwell deeper into disruption of a language that's spoken so much throughout the world. Is it clear to everyone? Is the entire page clear? Send me a thumbs up very quickly, everyone. I hope you understand why the example of the drunken uncle is given and how you create a mind map between the first and the second paragraph of this page, how you link the example of the drunken uncle to permanence and disruption in language. Yeah? Okay. Chalo, next page pe chalte hain. Here you go. I think that's the second last page. This whole page should be skimmed. You should skim the whole page. It's full of data, full of examples that you can skim. There's no major claim coming up here, just that एक फर्स्ट लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, जो लिंक करती है प्रीवियस पेज से. लैंग्वेज में चेंज लाना आपको अनकाउट अनफेटर्ड बताता है. व्हाट इज अनकाउट अनफेटर्ड? इन हिंदी बदतमीज, okay, uncivilized. So when you want to bring a permanent change in language, you might be coming across as somebody who's uncivilized, who's badameez. I'm sure nobody wants to be called one. And thus we stay away from making a permanent change in written language. These are the examples, all these are the examples that showcase how people don't want to make changes. The whole page is full of premise. You should skim it. I'm going to change the page right now and I'll take you to the next page. Wait. Here. Give me a second. Now, this page. That's the last page. Read this one, everyone. Send me done when you're done, and then I'm going to teach you a couple of things. Stick with me till the end. I have to talk to you about a few things. Okay. Now, if you've read the page, let's talk about the main idea. I'll reiterate. If you have a summary-based question, if you have a main idea, theme-based question, remember, your theme has to be a combination of the first and the last paragraph. 99% of the times you'll find the correct answer about the main idea with a combination of the first and the last paragraph. Okay, so if you have two options, one as the main idea, one option that says the main idea represents why English is an odd language because it uses you both as singular and plural.
And the second one is English is an odd language, yet it is used as an example to represent why various languages can be odd, and we have to make peace with that. You'll choose the second one because the second one includes the closure of the passage, the conclusion given in the passage. Okay, so remember, your main idea has to be a combination of the first and the last paragraph both, and everything that falls between it. So since the last one says it's an odd language, many languages are odd, we have to stop worrying about it and love the language in whatever way it is. Yes, Bharat, it has to be B. Okay, so it has to be a combination. Remember, if you have a main idea question, go back, skim through the first and the last paragraph very quickly within 10 seconds and you'll find your correct answer. That's how you find your main idea. 2, the tone here has to be analytical. The author is trying to analyze why is English odd with reference to using use same for plural and singular both. So, you probably is an example to show the oddity in languages, specifically giving you the example of English. And then the author relates them to different languages as well towards the end. So, the tone of the author here has to be analytical. 3, have you guys been attending the last lab to cat? If you still have not been doing so, please do that. We have had a history of many questions coming up in the actual examination, pretty similar to what we've covered up in the last lab. If you still have not been attending them live, make sure you do that. 3rd, is there any specific kind of topic or any kind of signs that you would want me to touch upon before you sit for your actual examination? These classes are few. I meet you only once a week. Do you want me to touch upon a specific kind of topic? If you're uncomfortable with that, I'm open for suggestions right now. So that next time when I come up, I bring articles on topics that you are uncomfortable with. I've been doing a lot of kinds of articles over the few months. But if there's anything that you still want me to touch upon again, I'll be very happy to do that. FYI, in the chat box, you'll find our schedule for the last lab. If you want me to touch upon any specific kind of topic, science, art, anything, I'll be very happy to. Philosophy, Bharat, आप regular नहीं हो मेरे क्लास में. Philosophy फिर से करना है? चलो फिर से कर लेंगे philosophy. Done deal. Next Thursday, one article on philosophy. Difficult लेके आऊंगी, supremely difficult. That's my promise to you. ठीक है? तो next class, philosophy पे article. Of course, CAT आ ही गया है और exam analysis होने वाला है तीनों slot का. Check out the timing. आपका जो भी slot है, उस according analysis देख लेना. ठीक है? And if you're targeting CAT 2023, our comprehensive program has been launched. You can enroll yourself for this program. The details are there under my video in the description box. Plus, we have our test series that we have launched. Abhi bhi time hai aapke paas. You can enroll yourself for the test series because we highly recommend you take one mock every day. Because time bahut kam hai aapke paas. As many mocks as possible, not more than one per day. And 17th October, our last lab to CAT starts. Or ma'am, figuring out inference takes a lot of time. If you could tell me how to do them, to find them quickly. Disha, देखो, I'll tell you. जब आप inferential questions देखते हो ना, the easiest way of obviously mastering the inferential question is inferring while you're reading. तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे example देखा हमने drunken uncle का, हमने और बहुत सारे examples देखे, ad का example देखा, तो हम अपने आप से पूछते हैं ये example क्यों दिया है? Good morning, Saral sir. Good to see you in my class. आप मुझे maths पढ़ाइए, मैं आपको verbal पढ़ाऊंगी. On that note, Saral sir, you're hijacking my class. On that note, आप लोगों को अगर inference questions में problem होती है, आप लोगों को on that moment infer करना पड़ेगा passage में. Referring back to the passage while you're reading it, while you're solving questions, will take up a lot of time, Disha. I will not recommend आप inferential question के लिए refer back करें. Also, Disha, inferential questions के लिए एक trick देती हूँ मैं आपको. Most of the questions can be answered by applying the main idea to the options. कौन सा option आपके main idea के ज़्यादा close है? Disha, do something. When you sit for the next mock, apply this main idea theory. देखना आपके main idea से आप बहुत सारे, not 100% but बहुत सारे options eliminate कर सकते हैं answers ढूंढने के लिए. Inferential भी.
So apply करो main idea कौन सा option closer है main idea के, and that's how you'll find your inference as well, apart from inferencing while you're reading the passage. I hope that is going to help you, Disha. Next mock में try करना, come back and tell me if it helped you or not. If it does not help you, I'll find some other way for you. Good morning, Shreya. That is all for today, everyone. Then please do not leave the class without hitting the like button, sharing the video with all your friends. You are the only one who can make me a YouTube popular star. Do that, okay? Share it with your friends and subscribe to our channel on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, download app on Google Play. If you're watching it recorded, comment under my video and tell me if you liked the video or not. Thank you so much, everyone, for today. I shall see you again next Thursday with a class on philosophy. I'll bring an article for you, a supremely difficult one. Shreya, every Thursday 10 a.m. This class is about to end. Okay? So you can watch this recorded video. You can catch me live again next Thursday. Bye, everyone. All the very best. Work really hard. Attend the last lab. See you very soon.